Hi friends, we are at Globe-Tech Engineering Expo at Pune and we are at the stall of AMS3D. Last year AMS3D had their stall, but this time we can see it as such a big stall here, and what important is that they are also coming out with some new products which can help companies to automate. I believe automation is something what they are feeling that which is going to be the future, as well as Haribavar is there, Ujjwal is there. Haribavar is the managing director of the company. Ujjwal takes care of the sales. He's the sales director. And whenever I talk to Hari, he's talk about how to bring more talent. So he's working with many colleges. Yes, sir. So how is the growth of AMS3D for last couple of years? Basically AMS started in 2010. उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना स्टार्ट किया. जैसा मार्केट का डिमांड है उस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी लाते गए. 10-11 साल हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड किए वेरियस इंडस्ट्रीज़ को, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, लोकोमोटिव, हेवी इंजीनियरिंग. नाउ 2-3 साल से हम लोग सेल्स वर्टिकल में उतरे हैं, जहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं. एक ZG हैंड स्कैनर और एक है पोर्टेबल CMM फ्रॉम PMT. उसके बाद हम लोग सर्विसेज में बहुत सारा इनोवेशन कर रहे हैं. गोल्ड टू प्लांट स्कैनिंग कंसेप्ट, डिजिटाइजेशन में हम लोग आ रहे हैं. ओके. विच इज स्कैन टू BIM मॉडल, स्कैन टू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज है, फूड फैक्ट्रीज है, उसके लिए हम लोग सिमुलेशन के लिए डेटा कलेक्ट करके देते हैं कस्टमर को बाय लीडा स्कैनर. उसके साथ हम लोग एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेट्रोलॉजी फील्ड में. कॉलेजेस के साथ MOUs किए हैं, स्किल अप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, गैप ब्रिज कर रहे हैं हम लोग. जैसे अभी स्टूडेंट को मेट्रोलॉजी ज़्यादा पता नहीं है, तो हम लोग वो मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है ना, स्किल मैन पावर की ज़रूरत है, तो ये स्किल मैन पावर प्रोड्यूस करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं. कंग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू. और आपने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक सेटअप बनाया है. हाँ जी. तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत इफ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट. मेरे ख्याल से हमारे सेल्स डायरेक्टर उज्जवल जी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. थैंक यू. Thank you. So seeing the problems that existing technology was having, like preparation time was the major challenge, putting stickers, and also the cost of the sticker was a major concern for the customers. So now we have come up with a technology called MarvelScan from ZG Technology. We are authorized partners for ZG for Indian operations, and with this technology there are a lot of advancements which has done to for the concerns that were existing, the pain of the customer, like preparation time, putting stickers, putting sprays, developing your part, and then doing the 3D scanning, and then there is a post-processing time for that. So now with this scanner we have developed, it's more advanced. So there is a setup called Marker Free, which is reverse positioning of the photogrammetry. So you don't need to put the markers on the part. We can do marker free scanning, and as well as no sprays are required. So 3D scanning is already available, but you are now taking it to the next level. Next level, exactly. So who are the major people who can get benefited by this? Who should implement this? Especially for this kind of setup, I feel OEMs have a lot of potential that they can look up to. And even for us also, we are focusing more on the OEM sectors, tier 1 sectors, so they can have a complete benefit of this technology. It's a booster for them. We are associated with this for past 1.5 years now. And in past 1.5 years, we have a very good, strong pipeline, and we have already sold more than 10 machines. This machine? Yes. But now this setup, this is something new you are coming out with, right? Yes, this is a very unique technology that we are talking about. Yes. All the best for you, Ujjwal, for getting this. Thank you for your valuable time. It was great having a word with you. Thank you.